Our today's class is for 11th. Subject is geology. Today's topic is structure of rocks. As you know, we have already discussed the texture of rocks, especially we uh, try to understand the structure and texture of minerals or rocks. We have already discussed the texture. Texture means the shape, size, and arrangement of particles in the rock, or we can say in the previous class, we have learned that the physical appearance or physical makeup of the rock, which shows the presence of greens, coarse, fine, or medium type of greens. So, similarly, structure of rocks is also a concern. We can say rocks commonly also vary on lower scales, best measured in centimeters, meters to kilometers. The individual contrasted lower scale features of rocks are called structures. Our task will be to see if there are rock structures that can provide us clues to a rock formational environment, whether igneous rocks, sedimentary rocks, or metamorphic rocks. There are hundreds of distinct rock structures. Some, if we try to understand, we have discussed stratified rock structure, laminated type of rock structure, parent or angular type of rock structure. We have also learned the ripple type of structures which are we are seeing in the say beach, where the ripple marks are on the sides or banks of a rivers. We have seen the ripple marks. So these structures we have almost discussed in the rocks when we have discussed sedimentary type of rocks or igneous type of rocks. Structures basically depends on the general features and spatial arrangement of the large components of rocks, or we can say mineral aggregates which are present in the rocks, which shows us the different structures on the basis of aggregation of minerals in the rocks. We read that, or we can understand the different structures of rocks. There are two types of simple structures, primary structures and secondary structures. So primary structures are those types of structures formed before or at same as material is in the process of becoming rock at that time. For example, these primary structures are formed as magma crystallizes or as sediments accumulate. When there is a time when magma crystallizes or when the sediments accumulate, magma crystallizes in the igneous rocks and the sediments accumulates in the sedimentary rocks. So these are the structures which are known as primary structures. Similarly, secondary type of structures are those structures which are imposed on rock after it has already formed. So, for example, those rocks which are formed as a result of compression of existing rocks. When sedimentary rocks are formed, then due to pressure or compression of already formed sedimentary rocks, the structures, the new type of structures which are formed are known as secondary structures in those rocks. So if we will try to understand in a simple way what are structures, rock structures. ये जो rocks होते हैं कॉमनली जब बात करेंगे इनकी, ये वैरी होते हैं बड़े पैमाने पे, जो स्ट्रक्चर्स लार्ज स्केल पे डिफर करते हैं, वैरी हो जाते हैं.
इनका जो बेस्ट मेजरमेंट हम कर सकते हैं सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में या किलोमीटर्स में इन स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए। जब हम इंडिविजुअली देखेंगे ये कंट्रास्ट हो जाते हैं लार्ज स्केल पे। इन फीचर्स ये जो होते हैं ये इनका तफर्क हो जाता है, इनकी फ़र्क हो जाती है इन फीचर्स के, रॉक फीचर्स के। उन अलग अलग नामों को डिफरेंट, जैसे हम बता रहे हैं स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर्स, लैमिनेटेड स्ट्रक्चर्स, अलग अलग नाम जो देते हैं इन्हीं को हम रॉक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। हमारा जो काम होता है तो सी दिस रॉक स्ट्रक्चर्स, इनको देखना। और ये जो रॉक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये हमें क्लू देते हैं कि रॉक फॉर्मेशनल एनवायरनमेंट कैसा होता है। मसलन कौन इग्नियस टाइप ऑफ है, सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक फॉर्मेशनल एनवायरनमेंट है या मैटम है, ये कौन से टाइप का एनवायरनमेंट, क्योंकि इन्हीं स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पे हम बता सकते हैं ये कौन से रॉक फॉर्मेशनल एनवायरनमेंट में बनी है ये रॉक्स। नो डाउट hundreds of distinct rock structures are there। तकरीबन बहुत सारे रॉक स्ट्रक्चर्स, मुख्तलिफ रॉक स्ट्रक्चर्स है जिनको हम शुमार नहीं कर सकते हैं। जियोलॉजिस्ट जो है इन्होंने इन रॉक स्ट्रक्चर्स को प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया है। ऑन द बेसिस दीज स्ट्रक्चर्स हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, और we can say these structures depend on the general features। ये जो general features या special arrangements इन components के rocks की है, जो special features या जो हम बता रहे हैं special arrangement of in aggregation of materials या minerals की जो rocks पे, उन्हीं बुनियाद पे इन structures को अलग अलग किया गया है या डिफाइन किया गया है। इनमें प्राइमरी स्ट्रक्चर्स अलग है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स अलग है। इस तरह से हम आसानी से समझ सकेंगे ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं जो उस वक्त रॉक बनी है एट द सेम टाइम जिस वक्त ये लावा या मैग्मा निकल चुका है, एट द टाइम ऑफ कूलिंग क्रिस्टलाइन जब हो जाती है, या उस प्रोसेस से जो उस मटेरियल एट द सेम टाइम व्हेन द रॉक हैज बीन फॉर्मेड एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन द प्रोसेस स्टार्ट्स फॉर फॉर्मिंग अ रॉक, उस टाइम जो अमल हो चुकी है, जो स्ट्रक्चर्स बने हैं, या दूसरे लफ्ज में हम कह सकते हैं कि जब सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर बाय लेयर बन चुकी है एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स की वजह से, तो उन स्ट्रक्चर्स जब वो स्ट्रक्चर बने हैं उनको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। इसी तरह से जो रॉक स्ट्रक्चर्स उस टाइम इम्पोज हो चुके हैं उन रॉक्स पे जो ऑलरेडी बने हुए रॉक्स हैं, जैसे पहले सेडिमेंट्री रॉक बन चुकी है, अब ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स और प्रेशर विद द कंप्रेशनल फोर्स की वजह से जो चेंज होगी स्ट्रक्चर में और एक नया स्ट्रक्चर वजूद में आया है, उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फीचर्स विच आर सीन इन द रॉक्स, जैसे हम कह सकते हैं स्ट्रेटिफाइड, लेयर बाय लेयर रॉक्स बन जाते हैं, सेडिमेंट रॉक्स, उसको स्ट्रेटिफाइड है। इसी तरह लेस देन 1 सेंटीमीटर जब लेयर बन जाता है उसको लैमिनेटेड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी तरह से एंगुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं कभी कभी, या किसी किसी रॉक्स, कुछ रॉक्स में हम देखते हैं कि रिपल टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, चाहे पानी की वजह से, विंड की वजह से, तो वो चेंज जो होते हैं उनको रिपल स्ट्रक्चर या बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, नो डाउट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट रॉक स्ट्रक्चर्स। सो वी here only mean to how what are the structures and how we can understand these structures in different types of rock formational environment, or whether these can be igneous, sedimentary or metamorphic rocks। so इनसे हमें पता चलता है कि किस environment ये rocks जो बनी है, कौन सा रॉक फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर है, किस तरह का स्ट्रक्चर, जिनके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। सो दिस वाज ऑलमोस्ट regarding the structure of rocks। So it is an easy topic to understand, so we must go through the other different types of structures so that we can get easily understand these structures। So this was all about for today's class।